I'm Priyanshu, and in December last year, I have pushed myself across a long hike into the Himalayas. From base camp to the summit, I have discovered the secrets of personal ability and self respect. However, for a trip like this, we all need co hikers and co trekkers, but in this case, I went alone. I have filmed myself and tried covering my experiences on this amazing trail to the summit of Mount Patalsu. Very, very much steep. Exhausted in this first few kilometers of this trek. Very exhausting. You can see the elevation around 60 degree of angle. Oh my goodness. Oh my god. Damn. Haven't thought that this will be this much exhausting. And look what's in front of me. He was a nice guy and quite familiar with the trail too. He is a mountaineer since 1960s and have covered almost all peaks and treks of Himachal and neighboring states too, like Hanuman Tibba and Chadhar trek of Ladakh. ये है हनुमान टिब्बा पूरे में ये देखा बिल्कुल बर्फ से ढका है ये अच्छा पूरा ढका बर्फ से करवास बहुत थे उसमें After this, I was completely on my own, just carrying the weight of my tripod and my camera, and just following his path towards the base camp of Patalsu. Nature is perfect in every single way, and it is amazing to be out here and be a part of this ecosystem that's just absolutely uninterrupted at all. सांस ले लो आप जल्दी करेंगे जल्दी से सांस फूलता थोड़ा धीरे 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 आपकी इतनी ज़्यादा एनर्जी का राज क्या है? कैसा किस राज का जैसे मैं इतना यंग हूँ आपसे हाँ और आप 60 साल के हो फिर भी इतना ऊपर मेरे से जल्दी चढ़ रहे हो। ऐसा थोड़ा होता है जो हम पहाड़ी लोग ना आप बोल रहे मत हमने कोर्स किया क्या नाम किया सब कुछ किया जैसा ट्रैकिंग किया हमारे में जैसा कि हैबिट ज़्यादा है अच्छा आप में हैबिट कम है जैसे कि आप शहर में रहने वाले हम शहर में नहीं चलेंगे अच्छा हमारा शहर में कुछ ताम झाम नहीं लगेगी कोई गाड़ी आएगी कोई कुछ आएगा हमारे को पता नहीं लगेगा कहाँ से क्रॉस होना कहाँ से हम शहर में थक जाते अच्छा 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 पहाड़ों में हम थकते नहीं क्यों अपनी मनोरंजन में चलना यहाँ कोई बोलता नहीं है कोई चलता नहीं है चलना शहर में बोलेगा यार यहाँ जाना थी अब इस पेड़ के पास जाना है यहाँ से गाड़ी क्रॉस कैसे करूँगा मैं
आपने कोर्स कर रखा है क्या कोई? कोर्स कौन सा? एडवांस भी, बेसिक भी, एडवांस भी, ट्रैकिंग भी, अच्छा अच्छा अच्छा। एमए भी, हाँ, जो भी सब किया। हमारा जैसा कि पहाड़ों में जैसे मैं मर जाऊंगा, को कुछ होगा तब मेरे को पैसा मिलेगा। अच्छा पूरा जिंदगी बीमा फुल बनाया मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। जो कि वो मिलेगा मेरे को, जैसे कि वो मेरा कौन देगा, हिमाचल टूरिज्म वाले देंगे। अच्छा टूरिज्म वाले देंगे, वो देंगे। ठीक। ऐसा होता है। अभी आपको बोलता मैं कि बिल्कुल पहले जाने का हिम्मत नहीं करना। कहीं ऐसा होता है कि कहीं पानी क्रॉस करना होता है, कहीं बर्फ़ क्रॉस करना होगा, कहीं कहीं गिर जाएंगे आप बर्फ़ में, जैसे ऊपर से गिरेंगे, पहाड़ों में गिरेंगे ऊपर बर्फ़, यहाँ तक तो आप बचेंगे नहीं। जब दो बंदे होंगे तब दिख जाएंगे यार यहाँ कुछ मेरा कुछ खराब है, यहाँ से कुछ है ये। कहीं तो यहाँ से स्टिप में गिर गया नीचे बैग के साथ, तलाश कौन करेगा? ये होता है। ट्रैक है, अंग्रेज लोग तो यहाँ नीचे लगाएंगे कैंप, सीधा सुबह चढ़ेंगे टॉप, शाम अच्छा। उनका बैग हम नहीं चढ़ सकते। क्यों? बहुत ही भारी होता है। अच्छा। अब आपको ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है, नहीं है हमारे पास। आपको हाइट लगेगा, मैं कैसे बचाऊंगा? अब मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं, कैसे बचाऊंगा? तो उससे वजह ऑक्सीजन लगाएंगे आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर थोड़ा आपका शांति होगी। ये तब जब भी आपने आना, मैप लाना साथ। मैप? हाँ, मैप मिलता मनाली में। अच्छा। कहीं मनाली में जाना, जो ट्रैकिंग वाला क्या नाम होता है, वहाँ से मैप खरीदना। ठीक है। वो पूरा बताएगा आपको रास्ता, यहाँ से जाना, यहाँ से घूमना, यहाँ से जाना, यहाँ से नहीं, यहाँ कैंप लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये होता है ऐसा। अब तो आगे आप कहीं धुंध पड़ गई तो आप तो भटक जाएंगे। अच्छा, पड़ती है धुंध पड़ती ना किस टाइम। अब आज तो मौसम साफ है, कल को कोई मौसम खराब हो गया, धुंध पड़ गई तो आपको कहाँ घुसेंगे? कहीं ऐसा हो गया बर्फ ही चालू हो गया तो फिर आप कैसे करेंगे? तब होता है कि जो यहाँ से लोकल गाइड ले गए ना आप, वो ढूंढ के पक्का भिजाएगा तेरे को, वो छोड़ेगा नहीं। उसको पता लगेगा यहाँ से हमने गया, यहाँ से आए, यहाँ बर्फ पड़ेगा तो बिल्कुल सफेद होगा, ऊपर से नीचे तक सफेद। आपने कहाँ से ढूंढ रख, इस रास्ते जाऊंगी, इस रास्ते जाएंगे, इधर नीचे से उतरूंगा, नीचे पहाड़ तो नहीं है। जब बर्फ पड़ेगा ना, यहाँ से यहाँ नहीं दिखता, जो आपने कमरा नहीं रखा। अच्छा। यहाँ से यहाँ नहीं दिखता। अच्छा। यहाँ से यहाँ नहीं दिखता। बिल्कुल नहीं दिखेगा, बिल्कुल होगा जैसा अंधेरे की तरह। यहाँ पड़ता हमारे को, अब तना ना पड़ता, क्यों थोड़ा क्या नाम हो गया ना, जैसे घर बन गए, जब कुछ हो गया। यहाँ पहुँचता हमारे 14 फुट पर। यहाँ इधर? हाँ, मेरे गांव में जाके। अभी भी? अभी नहीं आता। क्यों झूठ नहीं बोलना, ऐसा क्या अभी नहीं आता? अभी क्या नाम हो गया ना, प्रोपेरेंट हो गया पूरा। ये यहाँ घर बन गया, यहाँ घर बन गया, यहाँ घर बन गया, धुआं से उठ रहा ना वो। अभी तो इसका चालू है ना। अब तक आप ये ऐसे मौसम में गए, रात को कोई थोड़ा जैसा बादल निकलेगा, सुबह को सफेद। अच्छा, हो सकता है? हो सकता सफेद। वो सफेद क्या है? कौन? ये है बर्फ। ये जो छोटे छोटे? हाँ, जैसे कि इनको धूप नहीं लगता है। अच्छा अच्छा। आपको ये ऐसा बर्फ यहाँ से ऊपर पूरा मिलेगा। अच्छा। जगह जगह ये बात है। And after getting so much of warnings and listening some scary stories from him, I got a little bit of cautious and scared too. But still, as we were getting late, so we started walking towards the base camp again.
With every new time I venture into the mountains, I feel as if I'm returning to the place I belong. It is fundamental not just for my own good, but for the good of my environment, that I discovered myself as a part of it. I am nature and I can only find myself as a part of it. And finally, we reached at the base camp, where he left me and I was completely on my own. It's been 4 pm in the evening, and I'm just left with 2 hours of sunlight, in which I have to pitch my camp, take some rest, and collect some wood to make fire. It took me around 10 minutes to completely pitch my tent. So just pitched my tent right now, and I'm so much tired, like I haven't done anything actually. Like I hired a porter for my backpack. I just walked, but still I'm exhausted. I don't know why. So let's go. I have to take some sleep. Bye bye. So after taking a short nap of 15 minutes, I woke up and went into the woods to collect some material to make fire, to prepare food, and to avoid this bone-chilling winter of December.
Finally, the day is over, and this place is looking pretty much good in night also. I can still see some significant peaks of the range, like Himalayan Friendship Peak and some other peaks too. Lots of stars, lots of canopies of trees. Heaven is literally a myth. This place is real. It's like probably the best moment of my life. No, I have to sleep actually. Early morning I have to wake up in 6 a.m. probably, and I have to go for summit. I don't know I will wake up or not, but I have to try my best. I don't know I'm visible in this frame or not. This light is sufficient to capture my face. I don't know. So it's 3 a.m. in the morning and I cannot sleep actually because it's so much cold outside, and I cannot sleep because every time I'm entering into my sleeping bag I'm shivering like hell, unstoppable shivering. And just look at the walls of my tent, they are like blowing outside, so it means there is a lot of wind outside. Believe me, mornings in mountains are magical, and there is something completely wonderful about trekking alone, without anyone judging you or expecting anything from you at all. Where your only goal is to keep walking and get to the other side. You are swallowed in the silence, beauty, and nature, and just your own thoughts as your company. So far, I have watched so many of documentaries and read a lot of articles before coming to this expedition, and no doubt they all are helping me well. There I have to go on that peak. Still recording. So while you're hiking, you have hours upon hours of just uninterrupted thinking processes as you're hiking in the silence. I feel a lot more myself out here than I do pretty much everywhere else. Every time I'm out here, I really feel alive. And even the bad day of hiking is probably one of the best days of your life.
And yes, this expedition returned so-called time to my time, which is something I can handle well. In our life, because of our good backgrounds, we have always more than enough. We lived in excess, yet we still choke on dissatisfaction at the same time. We have everything, and subsequently do not see the essence. The mountain gave me satisfaction over a sip of water, the smell and taste of these cashews, or a place to rest my weary legs. I can even rejoice with a cup of ready-to-eat noodles and some energy bars. We have forgotten about the little big things. I do feel very insignificant when I'm walking into these big mountains. There is nothing but adoring loneliness and emptiness of Himalayas. And as I was getting over 4,000 meters, I started experiencing a little bit of oxygen dearth. And due to the lack of oxygen, I started taking frequent rests on my way, which is not advisable when you are above 4,000 meters, because you can get hallucination and exposure to the extreme cold can lead to your death. And from here, the slope was of more than 80 degrees, where one slip can cost my life. So I was walking with holding a strong grip, and my shoes were helping me a lot here.
have to go there. Let's go. It's a sort of sight I prayed for. So finally, I'm at the summit point of Mount Patalsu, 4,500 meters. Situation is quite overwhelming for me. And then I had some tears of joy. And I decided to look more into the panoramic view where I'm standing, instead of recording or filming something. I decided not to speak something in front of the camera, just to feel the place, to feel the wind, and see the beauty of the great Himalayas. I can see the whole Manali town down there. And that's the highest peak of Talatha range on Mantibba. I hope one day I will be there too. And there are also other peaks here. I don't know the name of these peaks. This structure is of Tibetan belief that every time you pass this place, you have to put a stone on it and chant Om Mani Padme Hum, which acts as a good landmark, but actually it's an offering to the spirits. So I have to go all the way there to the base camp again. I crave for these species of recreation and for the indelible moments of adventure. Practically hard and emotionally agonizing, life is a gift in which I need to unfold these kinds of moments. The flavors, the colors, and the smells of my origin. After this expedition, I found that I'm conscious, weak, emotional, and powerful at the same time. Completely split, but perfectly unique. I'm the author of a piece of eternity, and that eternity is my life. And I will make every possible effort to crave out the best possible monument out of this. Patalsu has pushed me to my limits. I've enjoyed snow, ice, wind and sun. But this whole expedition has left a deep impression on me, which I will never forget throughout my whole life.